All right. So guys, today we'll be doing some problems on your vector algebra, right? So let's start. So first I'll give you 2 minutes for each and every question to attempt and understand the question, and then we'll solve it. Okay. So here is your first question. So if a vector r of magnitude 3 root 6 is directed along the bisector of angle between the vectors a equal to 7i minus 4j minus 4k and b equals to minus 2i minus j 2k, then you have to find out vector r. All right. So please attempt this question. Yes, so what will be the answer? Anyone? Chat में आंसर बताइए, किसी का आंसर आया है क्या? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? So vector r is directed along the angle bisector of these two angles, है ना? तो क्या होगा यहाँ पर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, a vector and b vector, and vector r is directed along the angle bisector. All right, so we can use here r will be equal to, अगर a और b का एंगल बाइसेक्टर है तो r कितना हो जाएगा हमारा? r will be equals to lambda times of a vector upon mod a plus b vector upon mod b, right? r vector को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I can write r vectors in this in terms of a and b, because r is directed along the angle bisector of a and b, so it will be lambda times a vector upon mod a plus b vector upon mod b. Now what is your a vector? A vector is 7i minus 4j minus 4k. All right, so first let's find out what will be the modulus of a. Magnitude क्या आएगा a vector का? So it will be under root of 7 square plus minus 4 square plus minus 4 square. All right, so this will be 49 plus 16 plus 16, 32, and 49 plus 32, it will be 81, and under root 81 is 9. So magnitude a vector का कितना आ गया? 9. All right, and similarly what is our b vector? Okay, so let me just erase this. Yes, so what is our b vector? It is given to you in the question. B vector is minus 2i minus j plus 2k, right? So modulus of b, it will be under root of minus 2 square plus minus 1 square plus 2 square. So it is equals to 4.5 plus 4, 9, and under root 9 is equals to 3. That means modulus of b is equal to 3. So from here I can say this r vector will be equal to lambda times of 7 minus 4j minus 4k upon 9 b vector, which is minus 2i minus j plus 2k upon 3. All right, now it is given to us in the question that magnitude of this vector r is 3 root 6. तो अगर यहाँ से आप magnitude की बात करेंगे तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो LCM लेकर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया हमने, right? Will multiply and divide by 3, so this will be lambda as it is, and in the denominator you will have 9. 7i minus 6j, so it will be I, and minus 3j minus 4j, it will be minus 7j, and minus 4k plus 6k, so it will be plus 2k. All right, so this is finally your r vector. Now what will be the modulus from here? So mod r will be equal to lambda by 9 into under root of 1 square plus minus 7 square plus 2 square. All right, guys.
होने को दिया 10 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना आ रहा है √54। ऑलराइट, ये आ रहा है √54 एंड √54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √54 हो जाएगा आपका 96, so this will be 3√6 and modulus of r is given to you, it is 3√6, so from here 3√6 and 3√6 finally will get cancelled, so lambda is equal to 9. From this relation we are getting lambda equals to 9, and if lambda is equal to 9, then on putting lambda equal to 9 here, this lambda and 9 will get cancelled, so finally you will get r vector is equal to I minus 7j plus 2. That is your answer A. All right, so this was a very easy question, first question. You just have to find out that a vector which is in the direction of angle bisector of two, it will be something like this, lambda times A vector upon. So is this question clear to everyone? So पहले हमने mod So this was a pretty easy question. Is this question clear to everyone? So you ask, आप लोगों को manage participant में yes का option दिख रहा होगा guys. If this question is clear to everyone, please click on yes, all of you. And if you have any doubt, you can ask me in the chat box. Okay? Great. तो बहुत ही easy question था ये, first question था. Let's move to our second question. All right. So this is your second question. So I'm giving you first 2 minutes to solve this question. All of you please attempt it. So L1 and L2 are two lines whose vector equations are given to you. L1 is this, L2 is this. Well, lambda and mu are scalar and alpha is the acute angle between L1 and L2. So now if alpha is independent of theta, अगर alpha जो है हमारा वो theta से independent है, then you have to find out the value of alpha. Okay. So let's do this question. So here two angles are given to you and you have to and it is given to you that alpha, the angle between these two lines is independent of system theta. Then you have to find the value of alpha. So we know if we have two vectors A and B and they are making an angle theta, then this cos theta is equals to A dot B upon mod A into mod B, right? So here also two lines are given to you, that means it is equals to that two vectors. तो यहाँ पर भी हम angle क्या बोल सकते हैं, this cos of alpha, right? Because the angle between L1 and L2 is alpha. So cos of alpha, this will be equal to this R1 into R2 बोलूं मैं से, R1 into R2 तो ये कितना हो जाएगा? So A into, okay, so let me just write it fully. So it will be cos I cap plus √2 sin theta times j cap plus cos theta minus √3 times k cap. All right, and this will be A vector dot B vector. So B vector is your this vector, AI cap plus B cap,
ai cap plus bj cap plus ck cap, right? So a dot b upon divided by modulus of a, so it will be under root of, so this expression will be long, so it will be cos theta plus root 3 square plus root 2 sine theta ka square. So I'm directly writing it. It will be 2 sine square theta, and finally cos theta minus root 3 whole square. All right, cos theta. Okay, let me just rewrite this. It is cos theta minus root 3 whole square. So this is a mod a, and finally mod b will be simply a square plus b square plus c square. All right. So cos alpha will be equals to this vector a dot b upon under root a modulus of a into mod b, magnitude of a into magnitude of b. Now what we'll do, simplify करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये, it will be a into cos theta plus root 3, this I cap into I cap. So and I into j will be 0, I into k will be 0, है ना? तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, a into cos theta plus root 3. Similarly second term will be root 2 sin theta into b, and the third term will be c into cos theta minus root 3. All right, so in the numerator you'll get this terms, and now talking about the denominator. सो डिनोमिनेटर में थोड़ा सा लेंदी होगा, तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज cos थीटा प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, एंड हियर यू आर गेटिंग cos थीटा माइनस रूट 3 होल स्क्वायर. ऑलराइट, सो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एंड हियर यू विल गेट माइनस 2 रूट 3 cos थीटा, सो दैट टू टर्म्स विल बी कैंसल्ड डायरेक्टली, right? And I'm directly writing is cos square theta plus cos square theta, so this will give you 2 cos square theta. Root 3 square will be 3, and from here also you'll get root 3 square, so 3 plus 3 will be 6. All right, and 2 root 3 cos theta minus 2 root 3 cos theta will get cancelled, and this remaining 2 sin square, and this term is as it is, your a square plus b square plus c square. Now if you simplify it, the numerator you will get, if taking cos theta as common, I'll get cos theta into a plus c. The constant term will be root 3a minus root 3c plus root 2 sin theta into b. And in the denominator, what you are getting in the denominator, this 2 cos square theta plus 2 sin square theta is 2, and 2 plus 6 is 8. Okay, so तो simplify हो गया काफी ज्यादा यहाँ पर. ये कितना हो जाएगा, it will be 6 plus 2, that is root 8, and this term a square plus b square plus c square. Now this is your cos alpha. All right, this is your cos alpha. Now it is given to us in the question that this alpha is the acute angle and it is independent of theta. That means if it is independent of theta, then cos alpha should be also independent of theta. अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो cos theta independent of theta कब हो सकता है, when ये टर्म यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये cos theta पर डिपेंड कर रही है. That means this term should not be here, and similarly ये टर्म भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए. इस टर्म को जीरो करने के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, जस्ट ओवर हियर a plus c should be equal to 0, right? And to make this term equals to 0, I'll say b should be equal to 0. तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, then only your alpha can be independent. Given to us that alpha is independent of theta, तो हम क्या बोलेंगे, that a plus c should be equal to 0, also be equal to 0. तो अगर ये दोनों 0 हो गए तो ये टर्म यहाँ से गायब, ये टर्म भी यहाँ से गायब. ऑलराइट, आई थिंक आई एम मेकिंग सम मिस्टेक ओवर हियर. यहाँ पर कोई मिस्टेक है क्या, कोई मुझे बताएगा? इज एवरीथिंग करेक्ट, और मैंने कुछ मिस्टेक किया है कहीं पर? दिस विल बी a into cos theta plus root 3. सही है, सही है, सब कुछ सही है. हाँ, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ से cos अल्फा कितना आ रहा है, cos root 3 into a minus c, and in the denominator you are getting root 8 into, so this b square will be 0 and a plus c is equal to 0. तो यहाँ से क्या आ रहा है, a is equal to minus c, तो स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, this will be 2a square, and c is equal to minus a. So finally on putting c equal to minus a, you will get root 3 into 2a upon root 8 into root 2 of a. So from a will get cancelled, and this root 2, okay, this root 8 will be 2 root 2. All right, so calculation थोड़ा सा आपको करना होगा. So this root 8 will be 2 root 2 into root 2, and in the numerator you have 2. So this 2 and 2 will get cancelled. So finally you are getting cos alpha equal to root 3 by 2.
cos alpha equal to, then I can say alpha, yes, it will be pi by 6. cos alpha अगर √3/2 है तो एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, it will be pi by 6. That means answer to this question will be A option. All right, it's correct. Yeah, good Jasleen, your answer is correct, A option. All right, so in this question कॉन्सेप्ट वेक्टर्स का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, आपको सिर्फ डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करना था cos थीटा का फॉर्मूला, बट हियर इट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन दैट अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, सो यू हैव टू अज्यूम दिस कंडीशन दैट a plus c should be equal to 0 and this b should be to 0, then only our alpha will be independent of theta. और अगर ये दोनों कंडीशंस आप पुट करेंगे, so finally on simplifying you are getting cos alpha equal to √3/2. So I hope this question is clear to everyone. Is this question clear, guys? Please let me know. If any steps you can ask me. Okay. Okay, great. What about others? आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या? Yes पे click करना. This is clear to you. And if you have any doubt, ask me in the chat box. All right. So please note it down. This was a good one. Okay. Who is this? Hmm. All right. Should know. Okay. Let's move forward. So. Just a second. Let this question. Okay, this question. All of you attempt this question. In a quadrilateral ABCD, so quadrilateral is given to you ABCD and AC is the bisector of AB and AD. Okay, so AC is bisector of AB and AD, which is equals where angle between AB and AD, angle between AB and AD, this is given to you, angle 2 pi by 3 is the angle between AB and AD, guys. All right, this is the angle between AB and AD. Angle between AB and AD is 2 pi by 3, and this condition is given to you, 15 AC is equals to 3 AB equal to 5 AD. Then you have to find the cos of angle between BA and CD. All right, so this cos of BA and cosine of angle between BA vector and CD vectors means you have to find dot product, आपको find करना है, right, B and CD का. Yes, so attempt this question and tell me what will be the answer to this. Okay, you got the answer. It is equals to D. All right. All right, Ankita. Let other try.
Okay, so in this question, a quadrilateral ABCD is given to you, right? So let us assume this is your quadrilateral. This is point A, this is B, here you have D. All right. So angle between AB and AD vectors is given to you. It is 2 pi by 3. And also this AC is bisector. AC is your bisector of your AB and AD. AC is the bisector of AB and AD. That means ये पूरा angle 2 pi by 3 होगा. So then this angle will be pi by 3. And also it is given to you that 15 AC is equals to 3 AB equal to 5 AD. So you have to find cos of BA and CD. Okay, cosine आपको find करना है between the BA vector and CD vector. So let us assume that AC mod AC हमने मान लिया this is equals to lambda. So if I put in this equation, so you'll get 15 lambda equal to 3 AB. So from here we are getting mod of AB. Mod of AB it is equals to 5 lambda, right? And similarly, if you compare this first and third part, you will get AD modulus of AD equal to 15 upon 5, that is equals to 3 lambda. All right. So from here we are getting AB is equals to 5 lambda, AC is equals to lambda, and AD is equals to 3 lambda. ठीक है, इसको लैम्डा इसलिए माना है क्योंकि ये दोनों भी डिवाइड हो रहे हैं इससे परफेक्टली, राइट? तो ये 5 लैम्डा आ जाएगा, ये 3 लैम्डा आ जाएगा. अब आपको कॉस ऑफ बीए एंड सीडी निकालना है. तो जब भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता भी होगा शायद, हम एक पॉइंट को क्या मान लेते हैं, ओरिजिन. तो हमने ए वेक्टर क्या मान लिया कि ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन है. ठीक है, इस बी पॉइंट को हमने मान लिया ये बी वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर, ये सी वेक्टर है आपका, एंड दिस इज योर डी वेक्टर. ऑलराइट, सो नाउ कॉस ऑफ बीए एंड सीडी, दिस विल बी इक्वल टू बीए वेक्टर dot CD vector upon mod, right? Cos of cosine of angle between BA and CD vector will be BA dot CD upon mod BA into mod CD. डॉट प्रोडक्ट का हमने यहाँ पर यूज कर लिया कोसाइन एंगल का. तो अब मुझे बताओ BA वेक्टर कितना होगा आपका. सो फ्रॉम दिस, if this is 0, this is B, then this B vector, BA vector will be, क्या आप इसे माइनस B वेक्टर बोलोगे. एंड सिमिलरली CD वेक्टर क्या होगा, तो CD वेक्टर विल बी D minus C. Right guys, position vector लिख लिया हमने, BA vector will be minus B vector and CD vector will be D minus C vector. Alright, so let's do the dot product over here. So you'll get minus B dot D minus C vector upon BA vector, that means modulus of minus B will be same as mod of B, and CD vector, that means mod of D minus C. So if you take dot over here, so you are getting B dot C minus B dot D. All right, and in the denominator we are getting mod B into mod of D minus C. Now, so modulus of B, it is known to you. Yes, AB vector is equal to 5 lambda. AB vector is nothing but your D vector, that means mod of B is equal to 5 lambda. But you don't know about this D minus C vector. All right, so first we have to find this modulus of D minus C vector, and then we have to find about this product B dot C and B dot D. All right guys, so फटाफट यहाँ से फाइंड करेंगे कि B dot C और B dot D क्या है. आप लोग बताओ मुझे, किसी का आंसर आया क्या यहाँ पर. इसके आगे आप लोग प्रोसीड करिए प्लीज. ओके, तो B dot C, जस्ट यस, B dot C ये कितना हो जाएगा. तो यहाँ से आप लोगों को देखना होगा B dot C कैसे निकालें. All right, so yeah, B dot C. So B dot C will be equal to, from dot product it will be equal to mod B into mod C and cos between C vector. So it is pi by 3. तो cos pi by 3 कितना हो जाएगा आपका, 1 by 2. And now what is mod B? So this is your mod B. Let me just write it. AD. This is your mod B, 3 lambda, and this AC. This is your mod C.
All right, so from here you are getting B dot C is equal to mod B, which is 5 lambda, into mod C, which is lambda into 1/2. So finally B dot C is nothing but equal to 5 lambda square upon 2. All right, then you will get, all right, so B dot D, again it will be equal to mod B, which is 5 lambda. I'm directly writing mod B, which is 3 lambda, and cos of cosine of angle between B and D. So it is equals to 2 pi by 3, right? So what is cos 2 pi by 3? Cos of pi minus pi by 3. That is equal to minus cos pi by 3. So it will be minus 1/2. All right, everyone. So it will be minus 15 lambda square by 2. थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन स्टेप्स आप लोग फॉलो कीजिए। हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप हमने AC वेक्टर को लैम्डा मान लिया, तो AB और AD हमारे पास 5 लैम्डा 3 लैम्डा आ गया। इस टर्म्स में थोड़ा इजी हो जाएगा लैम्डा की टर्म में। फिर हमने A वेक्टर को 0 वेक्टर माना, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने बी वेक्टर, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने सी वेक्टर माना, एंड सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस डी इज डी वेक्टर। सो नाउ कॉस ऑफ बी एंड सी डी वेक्टर, सो हमने डॉट प्रोडक्ट का यूज किया यहाँ पर, और फाइनली फिर हमें क्या निकालना पड़ रहा है, बी डॉट सी, जो कि आ गया आपके पास 5 लैम्डा स्क्वायर बाय 2। बी डॉट डी इज ऑल्सो हियर, इट इज माइनस 15 लैम्डा स्क्वायर बाय 2। अब एक और चीज यहाँ पर रह चुकी है, विच इज दिस मॉड ऑफ डी माइनस। तो अगर हमने इसे निकाल लिया तो फाइनल आंसर आप लोग के पास आ जाएगा। ऑलराइट, so now mod of d minus c, so let us assume this is equals to k. all right, so now what can, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, तो ये कितना आ जाएगा, mod d स्क्वायर प्लस mod c स्क्वायर माइनस 2 mod dot c, आई एम सॉरी, this will be d dot c, right? d dot c equal to k square. all right, d dot c equal to k square. All right, so from here, what is mod d square? It is 9 lambda square. What is mod c square? It is lambda square minus 2 into d dot c. तो d dot c निकालोगे तो अभी कितना आ जाएगा, mod d mod c, and cos angle between d and c is pi by 3. So again cos pi by 3, it is equal to minus, sorry, 1 by 2. So 2 and 2 will get cancelled. Finally, you are getting 10 lambda square. So this will be getting 7 lambda square equal to k square. So on taking under root, finally you will get this k is nothing but equal to root 7 lambda. All right, that means modulus of d minus c, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है d minus c वेक्टर का, इट इज इक्वल, कर दीजिए सारी वैल्यूज। सो b डॉट c कितना आएगा, 5 lambda square by 2, this is minus minus plus 15 lambda square by 2 upon mod b is equals to 5 lambda, and this k is equal to root 7 lambda. all right, तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है 20 lambda square upon 2, that means 10 lambda square upon 5 root 7 lambda square. तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, and finally we are getting 2 upon root 7. तो ये आ रहा है 2 upon root 7. ओके, यहाँ पर कहीं माइनस साइन की आई थिंक गलती हुई है हमसे, सो आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन होगा आपका। ऑलराइट, सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, 2 upon root 7। ठीक ही है, आई डोंट नो वेयर, आप लोग चेक करके मुझे बता सकते हैं, कहीं दिख रहा है क्या किसी को हमने माइनस साइन आंसर किया है? यस, आई थिंक आंसर इज सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, हमने माइनस साइन कहीं पर मिस्टेक कर दी है। राइट, सो योर फाइनल आंसर विल बी 2 upon root 7। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 upon root 7, सो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी डी। सो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये, ऑलराइट, लेकिन आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, और ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसमें हमेशा एक चीज करा करो कि एक पोजीशन वेक्टर, एक किसी भी पॉइंट का आप ओरिजिन मान लो, इससे काफी हेल्प हो जाती है हमें। ओके, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? शुड वी मूव फॉरवर्ड? यस, कैलकुलेशन था थोड़ा लेंदी, बट आई होप इट इज क्लियर। ओके, so let's move to our next question.
Okay, so this is a easy question. Yes, read it, all of you. Yes, solve this question. All right. So in this question, a vector A is given to you, I plus j minus k. B vector is given to you, I minus j plus k. Now, C is a unit vector perpendicular to and coplane two vectors A and B. Then I can write this C will be equals to lambda times A vector plus mu times B vector. All of you. Okay, so just let me just use this space also. This is also yeah. So this C vector will be equals to lambda A plus mu times B. All right, because it is coplanar. C vector is coplanar with A and B. So this will be equal to C is equal to lambda times what is your A? It is I plus j minus k plus mu into B is I minus j plus k. So from here we are getting C vector is equals to lambda plus mu times I plus lambda minus mu times j plus minus lambda plus mu times k. All right, so this is our C vector. Now it is perpendicular to A. That means C dot A should be equals to 0. All right, यहाँ पर क्या condition given है? C is a unit vector. It is perpendicular to A and it is coplanar with A and B. So first coplanar है तो C will be equal to lambda A plus mu B होगा. Right. Now we are using the condition if C and A are perpendicular. तो C dot A को 0 करा तो A vector यहाँ पर दिख रहा है आपको. इसके साथ अगर डॉट लोगे इसका तो ये कितना आ जाएगा लैम्डा प्लस म्यू प्लस लैम्डा माइनस म्यू एंड दिस माइनस ऑफ क्योंकि यहाँ पर के साथ माइनस है सो माइनस ऑफ माइनस लैम्डा प्लस म्यू दिस शुड बी अंडर 2 लैम्डा एंड दिस माइनस एंड माइनस ये 3 लैम्डा हो गया ये म्यू और म्यू कैंसिल और यहाँ आ रहा है माइनस म्यू दैट मींस 0 यू कैन से इक्वल टू 3 लैम्डा और एक म्यू इक्वल्स टू क्या आ गया आपका आ गया म्यू की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो सी आपको कितना मिल जाएगा इट विल बी 4 लैम्डा आई माइनस 2 लैम्डा जे एंड दिस विल बी माइनस 4 लैम्डा के वेक्टर ऑलराइट ये वेक्टर आ गया आपके पास सी वेक्टर ऑलराइट ओके आरुषि आई विल चेक whether it will be C or not. Now it is unit vector तो आप क्या करोगे आप इसे डिवाइड कर दो यूनिट वेक्टर है तो कितना हो जाएगा इसका लैम्डा कॉमन ले लिया तो आ रहा है 4i माइनस 2j माइनस 4k वेक्टर ऑलराइट तो इसको मॉड्यूलस ऑफ सी कितना आ जाएगा 4 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36 से डिवाइड कर देते हैं 6 से तो यहाँ से सी कैप यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ सी हम कितना लिखेंगे 4i minus 2j minus 4k upon 6. This is your C cap. Now the condition is given to us that then a unit vector D which is perpendicular to both A and C is. तो हमें निकालना क्या है एक यूनिट वेक्टर D निकालना है which is also perpendicular to both A and C. Alright, so बहुत ही easy question है just आपको steps मैंने एक बार सारी conditions यूज हो रही है यहाँ पर कोप्लेनर आ गया ठीक है डॉट प्रोडक्ट का यूज है वो सब मैंने कंडीशन यूज करने के लिए यूज किया है तो हाँ तो यूनिट वेक्टर डी है जो कि परपेंडिकुलर टू ए और परपेंडिकुलर टू सी बोथ है ना
तो डी हमने मान लिया ऐसा कुछ होगा, d1i प्लस d2j प्लस d3। ऑलराइट, इसका डॉट अगर ए के साथ लोगे तो देखो कंडीशन क्या मिल रही है, d1 प्लस d2 माइनस d3 इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। ऑलराइट, और अगर इसका डॉट आप सी के साथ लोगे तो क्या कंडीशन मिल रही है, 4d1 माइनस 2d2 माइनस 4d3 इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो अगर 2 से डिवाइड कर दो तो आ रहा है 2d1 माइनस d2 माइनस 2d3 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, अब क्या करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो d2 कैंसिल, आ रहा है 3d1 माइनस 3 इक्वल d1 इज इक्वल टू d। और अगर d1 d3 के इक्वल है तो d2 की वैल्यू देखो 0 हो जाएगी डायरेक्टली। दैट मींस ये वेक्टर किस टाइप का आएगा, दिस वेक्टर विल बी। और अगर ये कैसा वेक्टर है तो d1 की वैल्यू आप डायरेक्ट बोल सकते हो विल बी इक्वल टू रूट। ऑलराइट, सो यहां से डी वेक्टर आ रहा है आई प्लस के अपॉन रूट टू, आई प्लस के अपॉन रूट टू। सो विल बी द करेक्ट ऑप्शन, नॉट सी बट डी। यहाँ पर d2 की वैल्यू तो 0 हो जा रही है, सो विल से इट विल बी इक्वल्स टू आई प्लस के अपॉन रूट टू। यहाँ से डी वेक्टर कितना आ रहा है, डी ऑप्शन। ऑलराइट, क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन होगा। ओके, एंड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन आल्सो। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि जहां पर आपको देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एक करके स्टेप बाय स्टेप आपसे बहुत सारा सॉल्व करवाया है बस, है ना। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत लेंदी सा स्टेटमेंट होता है और हम लोग को लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपली यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट, बस एक एक स्टेप्स को आप फॉलो करते जाएं। और इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही थे, आई प्लस जे, जे प्लस के, आई प्लस के, तो आप किसी भी एक पर अगर जल्दी में मार दोगे तो मतलब एक तरीके से आप अपने -5 करके आ रहे हो, +4 होता उसकी जगह -1 हो गया। राइट, सो 5 मार्क्स आपके कैंसिल हो गए। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, बहुत ही इजी था। नाउ लेट्स डू अदर क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सो हियर ये पॉइंट मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। दिस पॉइंट इज 7/3, 7/3, 5/3। ऑप्शन ए जो है वो ये है आपका। ऑलराइट, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, पढ़िए अच्छे से इसे, जस्ट रीड इट। अ लाइन L passing through origin is perpendicular to the lines L1 and L2. Then the coordinates of points on L2 at a distance of √17 from the point of intersection. This is point of intersection of L and L1. ठीक है, ये जो ओवरलैप हो गया पार्ट थोड़ा सा, ठीक है, लिखा है इंटरसेक्शन ऑफ L and L1 is. So this is MCQ question, multiple choice question. To
What are we supposed to do now?
Hi guys, there is some issue, like we are fixing it. Okay, just wait. Akshita, can you make co-host to Vishal sir? For me.